हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कंप्यूटर के कुछ इंपोर्टेंट क्विज क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच फंक्शन की ओपन्स द हेल्प मेन्यू इन मोस्ट सॉफ्टवेयर? कौन सी फंक्शन कीज अधिकांश सॉफ्टवेयर में सहायता मेन्यू खोलती है? एंड द ऑप्शंस आर F1, F2, F3 and F4. And the answer will be A, that is F1. And the next question is which key opens the configurations setting menu in Tally? Tally में configuration setting menu कौन सी कीज खोलती है? And the options are F12, F11, F5 and Control plus P. And the answer will be A, that is F12. And the next question is which shortcut is used to switch between opens applications in Windows? Windows में open applications के बीच switch करने के लिए किस shortcut का उपयोग किया जाता है? And the options are Control plus Tab, Alt plus Tab, Shift plus Tab and Shift plus Enter. And the answer will be B, that is Alt plus Tab. And the next question is PNG is the acronym for? PNG का संक्षिप्त रूप है and the options are Portable New Graphic, Portable Network Graphics, Printable Natural Graphic and Portable Numeric Graphics. And the answer will be B, that is Portable Network Graphics. And the next question is what is the shortcut to insert a new worksheet in Excel? Excel में नई वर्कशीट डालने का शॉर्टकट क्या है? And the options are Shift plus F11, Control plus N, Control plus F1 and Control plus Shift plus N. And the answer will be A, that is Shift plus F11. And the next question is which function is used to count only numeric values in a range? किसी श्रेणी में केवल संख्यात्मक मानों की गणना के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? And the options are COUNTIF, COUNTA, COUNT and SUM. And the answer will be C, that is count. And the next question is which keyboard shortcut opens the format cells dialog box? कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खोलता है? एंड द ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस F, Alt प्लस एंटर एंड कंट्रोल प्लस Shift प्लस F. एंड द आंसर विल बी A, that is कंट्रोल प्लस 1. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which function returns the number of characters in a text string? कौन सा फंक्शन टेक्स्ट स्ट्रिंग में वर्णों की संख्या लौटाता है? एंड द ऑप्शंस आर len, count, text and find. And the answer will be A, that is len. And the next question is what is the use of the if function? if function का उपयोग क्या है? And the options are calculates value, creates a chart, combines two cells and tests a condition and returns a value. And the answer will be D, that is test a condition and returns a value. And the last question is what is the use of the freeze panes features? freeze panes feature का यूज क्या है? And the options are sort data, hide data, highlights errors and locks rows or columns to stay visible. And the answer will be D, that is lock rows or columns to stay visible.